station. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. This is the beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, namaste Narayan, doso bhai beno, swagatam, welcome to Radio SKS, your choice, your station. Jawel, de topic van vandaag hier bij Radio SKS, beste luisteraars, zoals gezegd, jawel, de meeste kinderartsen vinden dat jonge patiënten recht heeft op euthanasie. Dus bij me, hoe denkt u hierover? Jawel. Tell me on Radio SKS, your choice, your station. U kunt natuurlijk ook zeg maar lekker aanschuiven bij Radio SKS om je zeg maar jouw zegje te doen. Je mag bellen met 036 52 50 898 live in de studio. Jawel. Dus een hele goede morgen, welkom en just enjoy the morning show on Radio SKS. Ja, nou even wat gedaan, wat je denkt van, hey, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Normaal gesproken lukt hem niet en nu lukt hem in één keer wel. Dus ja, hoe zit het nou in elkaar? Ga hem straks even kijken door zo bij me noemen, maar don't worry, be happy. En jawel, mocht het zo zijn dat u toch wat kwijt wil over de topic van vandaag, door zo bij me noemen. Programma hoe 8 op de 10 artsen die de afgelopen jaren jonge ondraaglijke lijden kinderen van onder de 12 jaar behandelen, vinden dat actieve levensbeëindiging onder bepaalde omstandigheden mogelijk moet zijn. Maar ja, goed, dus bij me. Het moet mogelijk zijn, maar
Hoe kijkt u daar tegenaan, beste luisteraars? Wat is uw optie hierop? Zegt u van, jawel, het zou wel moeten, of hebt u daar een heel andere, zeg maar, kijk op? We horen het heel graag van u hier bij Radio SKS. Dus bij me गीत संगीत में आपका सेवा है, डोंट वरी, बी हैप्पी। हैना जी एक नगमा प्रोग्राम में पेश करते हैं, हैना सीता महाबीर सिंह। दोस्तों भाई बहनों, हैना जी मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम टू रेडियो एसकेएस। और आइए दोस्तों सुनते हैं हैना सीता महाबीर सिंह का मनपसंद गीत ऑन रेडियो एसकेएस।
ऐसी ही और या भाई बस सोचते यूं ही सवेरा हो गया ना, है ना। सीता महावीर सिंह के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया गया है ये lovely song on Radio SKS. Willy Ramay, ook een hele goede morgen. Welcome to Radio SKS, your choice, your station. दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखा जाए तो क्या बता रहे प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों. Jawel, een hele moeilijke kwestie. Dus bij me het is de meeste kinderartsen vinden dat de jonge patiënt recht heeft op euthanasie. Dus, maar, dus bij me we zijn er allemaal natuurlijk niet zo eens mee, hè, denk ik. De ene wat meer, zeg maar, omdenkt dan de andere. Mr. Germany, welkom to Radio SKS. En dekha jaye to, jawel, Dial, welkom to Radio SKS. Dus bij me 8 op de 10 artsen die de afgelopen jaren jonge, ondraaglijke lijdende kinderen van onder de 12 jaar behandelen, vinden dat actieve levensbeëindiging onder bepaalde omstandigheden mogelijk moet zijn. Maar vinden wij dat ook, dus wij nou als ouders, jawel, als familie, blijkt uit onderzoek van 3 Nederlandse academische ziekenhuizen. Jaarlijks zouden naar schatting 60 kinderartsen dergelijke patiënten behandelen. Het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. In Groningen het Erasmus MC en het Amsterdam UMC hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 38 artsen ondervraagd, die de afgelopen jaren meer dan 350 ernstige zieke jonge patiënten behandeld hebben. Jawel, दोस्तों भाई बहनों, इसके बारे में और कुछ आपके मध्य में पेश करूंगा. बात यह है दोस्तों भाई बहनों, कहना चाहता हूं आपसे, jawel, tot hoeverre bent u mee eens dat jonge kinderen, jawel, recht zou moeten hebben op euthanasie? Ik hoor het heel graag hier bij Radio SKS, jawel. चलते हैं प्रोग्राम आगे आपके साथ मिलकर दोस्तों भाई बहनों. प्रोग्राम में नॉर्मा सुक्खू साथ भी दे रहा है, सवित्री उमरो शामिल हुआ है, मीना फ्रॉम utrecht ook aangeschoven bij Radio SKS. तो आइए दोस्तों भाई बहनों, ये देखा जाए कि भाई टाइगर प्रोग्राम में शामिल हुआ है. Mr. Tiger, good morning, welcome and just enjoy. It is your choice, your station, Radio SKS. Ja, weet je, zo hebben we zoroer आप बताइए. En u mag natuurlijk ook bellen, hè, met 036 52 50 898 hier bij Radio SKS. तो जरूर दोस्तों भाई बहनों, आप फोन करना तो आप अपना रिएक्शन प्रोग्राम में दे सकते हैं. U kunt bellen met 036 52 50 898 voor jouw reaction hier bij Radio SKS. Jawel, beste luisteraars. Ook Listen to Me Radio app, Bigo Live en TuneIn. Ook van harte welkom. या दोस्तों भाई बहनों, नॉर्मा सुक्खू प्रोग्राम में शामिल हुआ है. नॉर्मा जी क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों, ये मजेदार नगमा पेश करने जा रहा है. दोस्तों भाई बहनों, नॉर्मा का मनपसंद गीत ऑन रेडियो एसकेएस मिल के सुनते हैं. किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया है. चिराग जैसे
पूछ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये मौसम रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में। बदल रहा है मेरा जहां, कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। Ja, wat hoorde ze bij me? So lovely song on Radio SKS. Norma Soekoe ने प्रोग्राम में पेश किया है. Het is your choice, your station, Radio SKS. Jawel, dus wij we साथ ही साथ में हम बात कर रहे हैं आपसे दोस्तों भाई बहनों प्रिय सुनने वाले सुनो over jawel zoals gezegd hier bij Radio SKS jawel dat kinderen dossen wij benoem zeg maar recht hebben, jonge kinderen recht hebben op euthanasie bij zeg maar dat ze ongeneeslijk ziek zijn of dergelijke. Jawel. Sangeeta Ganga ook van Welcome to Radio SKS. कैसे हो संगीता जी? सब ठीक ठाक है? आशा उम्मीद करता हूँ आपको स्वागत है प्रोग्राम में. Wel, dus we hebben zoals ik dat u vertelde net over dat er bepaalde zeg maar onderzoeken naar gedaan zijn. Er zijn een heleboel artsen onderzocht naar zeg maar ja van wat ze daarvan vinden. Dus we hebben nu 32 artsen laten weten dat euthanasie ook voor jonge kinderen mogelijk moet zijn. Van de in de totaal 359 gevallen zouden 46 ondraaglijke lijdende patiënten baat hebben gehad bij euthanasie, aldus de artsen. Bij veel kinderen kan het overlijdenproces ondanks een verslechterde gezondheid weken duren en lijden zijn in het periode veel pijn. Ook ouders willen dat proces versnellen of inkorten, aldus professor onderzoeker Edouard Verhagen. Dus wij hebben nog prijs, meneer Walesino, maar nog steeds de vraag aan u toe, jawel. Als ouder zijnde, wat denkt u hierover, beste luisteraars? Hebt u een mening of zegt u van, ik laat het in het midden, ik heb geen mening. Dat is ook een mening, hè? Geen mening hebben is ook een mening. Dus wij benoemen. Biedke wel, ook namaskar, welkom en just enjoy the morning show on Radio SKS, your choice, your station. दोस्तों भाई बहनों सवित्री उमराव प्रोग्राम में शामिल हुआ है और एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में ला रहा है. सोनी जी चौहान और यानी कि उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में आप तक पहुंचाने जा रहा है. यह देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों सवित्री उमराव ऑन रेडियो एसकेएस.
खुशी से कर दिए तेरे चाहत तू हसरत भी तू है प्यार की मेरे किस्मत तू है तू चाहे लाख करे इनकार मैंने तो तुम्ही से प्यार करना है तेरे सपनों में जीना है तेरी बातों पे एतबार करना है मानो न मानो मैं दीवानी तेरी होए हानियां यारियां तुम्ही से लानियां हानियां यारियां तुम्ही से लानियां अखियों में तू वसदा मेरी जिंदगी तू माही वे अखियों में तो बसदा मेरी जिंदगी तू आती वे इतना तो मेरे दिल को यकीन है और तेरे जैसा कोई नहीं है तू दुनिया में सबसे जुदा है तुझ पे मेरा प्यार फिदा है तू चाहे लाख करे इनकार मैंने तो तुम्ही से प्यार करना है मिलाना एक जो तू ही तो मुझको क्या भला संसार करना है मानो न मानो मैं दीवानी तेरी होए हानियां यारियां तुम्ही से लानियां हानियां यारियां तुम्ही से लानियां तुम्हें से लागिया या दोस्तों भाई बहनों इस तरह से प्रोग्राम में पेश किया है ये प्यार बड़ा रंग में देखा जाए तो सबित्री उमरो ऑन रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन सोनी दी चौहान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में आपके मध्य में लाया गया है दोस्तों भाई benen beste luisteraars ik heb het nog steeds met u over jawel euthanasie voor jonge kinderen tot hoeverre is dat mogelijk tot hoeverre vindt u dat dat zeg maar gepleegd kan mag worden. Jawel, dat hoor ik heel graag van u hier bij Radio SKS. Your choice, your station. Prinsen wel eens jawel. Euthanasie voor jonge kinderen, jawel. Zoals ik u net ook vertelde. Het onderzoek is zaterdag overhandigd aan de Tweede Kamer. De onderzoekers hopen dat er een nieuwe regelgeving rondom actieve levensbeëindigen voor kinderen komt. Grijs gebied in regelgeving voor euthanasie bij jonge kinderen. Dus momenteel kunnen kinderen tussen 12 en 16 jaar oud zelf beslissen over hun behandeling. Bij kinderen tot een jaar, tot een jaar oud ligt de beslissing bij de ouders en de artsen. Voor de groep kinderen tussen beide leeftijden zijn de regels onduidelijk. Mede doordat zij nog niet wilsbekwaam zijn. Dus we hebben euthanasie voor jonge kinderen is de laatste jaren een bespreekbaarder onderwerp geworden. Jawel. Dat was in 2018 in België het eerste land dat het omstreden idee uitvoerde. Dus we hebben
Is het bespreekbaar? Is het niet bespreekbaar? Tot hoeverre vindt u dit mogelijk? Gajadhar Krishnamala, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy the morning show on Radio SKS. Your choice, your station. तो बस यूं ही आपके इंतजार में दोस्तों भाई बहनों देखा जाए कि बीत केवल प्रोग्राम में शामिल हुआ है तो बीत केवल एक फरमाइश प्रोग्राम में ला रहा है। आइए सुनते हैं मनपसंद गीत फन बीत केवल ऑन रेडियो एसकेएस। प्यासे मन की बहार कब से था तुम्हारा इंतजार तुम आए तो आया करार ओ मेरे प्यार क्या सनम मेरे गीत गाता है हाँ सनम हाँ सनम हाँ सनम तो छोड़ो ये अदा गले तो मिलने दो जल्दी है ऐसी क्या ये दिन तो ढलने दो मेरे प्यासे मन की बहार कब से था तुम्हारा इंतजार तुम आए तो आया करार मेरे प्यार यूं ही दूर रहना है ना सनम ना सनम ना सनम कहूँ जो भी कहना है हाँ सनम हाँ सनम हाँ सनम तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां कहने को हम है दो लेकिन है एक जान मेरे प्यासे मन की बहार कब से था तुम्हारा इंतजार तुम आए तो आया करार ओ
Very lovely song on Radio Westcast, your choice, your station. दोस्तों भाई बहनों, बीत केवल के वास्य प्रोग्राम में पेश किया गया है ये बीत का मनपसंद गीत on Radio Westcast. दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो आगे प्रोग्राम में बात बता रहा है आप सभी से. Ici daar ze, wie mij partij van het onderzoek is zaterdag overhandigd aan de Tweede Kamer. De onderzoekers hopen dat er een nieuwe regel rondom actieve beëindiging, levensbeëindiging van kinderen komt. Grijs gebied in regelgeving voor euthanasie bij kinderen. Jawel, momenteel kunnen kinderen tussen 12 en 16 jaar oud zelf beslissen over hun behandeling. Bij kinderen tot een jaar oud ligt de beslissing bij ouders en de artsen. Voor de groep kinderen tussen beide leeftijden zijn de regels onduidelijk, mede doordat zij nog niet wilsbekwaam zijn. Euthanasie voor jonge kinderen is de laatste jaren een bespreekbaarder onderwerp geworden. Jawel, België, het eerste land dat het omstreden idee uitvoerde. Hoe zit het met Nederland en hoe zit het met mijn luisteraars? Beste luisteraars, jawel. Hoe zit het met jullie wat de euthanasie betreft bij jonge kinderen? Dat hoor ik heel graag van u hier bij Radio Westcast, Your Choice, Your Station. दोस्तों भाई बहनों, साथ साथ में देखा जाए तो प्रोग्राम में शामिल हुआ है यानी कि लाइलून निशा रोजन बड़ी देर से प्रोग्राम को सुन रहे हैं. तो लाइलून जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अभी सुबह तो है ना, शाम नहीं हुआ है. बस आप ही के इंतजार में ये नगमा पेश करने जा रहा हूं मैं. आइए दोस्तों भाई बहनों, सुनते हैं मिस लाइलून निशा रोजन के वास्ते प्रोग्राम में ला रहा है. काश काश यूं होता हर शाम साथ तू होता चुपचाप दिल यूं रोता हर शाम साथ तू होता गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता तुझको
कब तक लूं सहारा, अब तो तू आ भी जा खुदारा। मेरी ये दोनों पागल आंखें हर पल मांगे तेरा नजारा। समझाओ इनको किस तरह, इन पे मेरा बस नहीं चलता। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है जाता तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता। Ja, we दोस्तों भाई बहनों, a very lovely song on Radio SKS लैलूनी सरोजन के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया गया है। तो दोस्तों भाई बहनों, देखा जाए तो सफीदा शक्रीदन प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है, लिन जन मोहम्मद भी शामिल हुआ है। वेलकम टू रेडियो SKS लिन एंड सफीदा, ook van harte welkom गायत्री रामचरण। Jawel. Dochter भाई बहनों, प्रिय सुनने वाले सुनो, हम बात कर रहे हैं आप सभी से about de meeste kinderartsen vinden dat jong patiënt recht heeft op euthanasie. Tot hoeverre denkt u dat als ouders zijnde dat u daarmee meegaat, beste luisteraars? Zeg maar, kinderen zoals verteld wordt van een jaar of 12 tot 14 jaar mogen ze zelf beslissen en de voor van 1 tot en met 10 jaar, dus dat is dan een grijze gebied. Dat weet men niet hoe men daarmee om zou moeten gaan. En toch is nog steeds de vraag, dus is het bespreekbaar? Kan men daarover praten? Euthanasie bij jonge kinderen. Jawel, dus zoals ik u moet vertellen van euthanasie voor jonge kinderen is de laatste jaren een bespreekbaarder onderwerp geworden. Hoe bespreekbaar is het bij u geworden, beste luisteraars? Jawel. Als u daar een reactie op wil geven, hoor ik dat heel graag hier bij Radio SKS 036 52 50 898. Your choice, your station, jawel. Parabhamoti, also merap yabar namaskar, welcome and just enjoy. दोस्तों भाई बहनों, अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ, देखा जाए तो रीता हुबदार ज्वाला प्रसाद प्रोग्राम में साथ दे रहा है। तो आइए रीता जी, आपके लिए प्रोग्राम में ला रहा हूँ मैं। हल्का हल्का शुरू
या भाई दोस्तों भाई बहनों क्या बात हुआ दोस्तों भाई बहनों वेरी लवली वेरी स्वीट इस तरह से प्रोग्राम में पेश करे थे रीता हुबदार ज्वाला प्रसाद के वास्ते बस यूं ही हल्का हल्का सा जरूर है ना दोस्तों भाई बहनों या सवाल ये हुआ है दोस्तों भाई बहनों आज के प्रोग्राम में जो आपसे बात कर रहे थे इसी तरह से प्रोग्राम में बता रहे थे दोस्तों भाई बहनों momenteel kunnen kinderen tussen 12 en 16 jaar oud zelf beslissen over hun behandeling. Bij kinderen tot een jaar oud ligt de beslissing bij ouders en artsen. Voor de groep kinderen tussen beide leeftijden zijn de regels onduidelijk. Mede doordat zij nog niet wilsbekwaam zijn. Jawel, dus we hebben hoe denkt u hierover eigenlijk? Jawel, denkt u van nou, het is niet mijn pakje aan, ik heb er niks mee te maken? Of zegt u van nou, er moet toch wel over nagedacht worden? Dan hoor ik dat heel graag van u hier bij Radio SKS. We hebben nog 7 minuten te gaan hier bij Radio SKS, dus we nog voor de klok van 12 uur. Het is your choice, your station, Radio SKS. Jawel, dus we nog. तो आइए प्रोग्राम में पेश करते हैं अगला नगमा देखा जाए तो इसी तरह से प्रोग्राम में लाने जा रहा हूँ प्रभामोती प्रोग्राम में साथ दे रहा है प्रभा जी गुड मॉर्निंग वेलकम एंड जस्ट एंजॉय आपके लिए प्रोग्राम में पेश करते इस तरह से यवाल हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आप सुन रहे हो ना शिख आधे आधे पिया को दिखलाए तन मन कांपे राधा सिहर सिहर जाए हालो रे 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 राधा के अंगना हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे राधा तोरा रंग धूप सा किसना के मन को भावे रे कैसे कोई होरी के दिन धूप को रंग लगावे रे लुक छिप जाए कहाँ रुक जा रे भोली मिलकर आज इधर खेलेंगे होली बस एक बार लगे शगुन का टीका हालो रे 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 राधा के अंगना हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे राधा तू है मोरी बांसुरी तोहरे बिन कान्हा धारे तो से अरज रहना अधरों से लग के ज्यादा रे एक पल रूठ गई सुनकर ये राधा इस पर कान्हा को प्यार आया ज्यादा जब मन प्रेम रंगा सकल रंग भीगा हालो रे 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 राधा के अंगना हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे Ja, weet je zo hebben we very lovely. Is dat से प्रोग्राम में लाया है प्यार भरा नगमा ऑन रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन देखा जाए तो 6 मिनट बाकी है दोस्तों भाई बहनों 12 बजने में या
तो माला मोती के लिए ये प्यार भरा नगमा प्रोग्राम में पेश करे थे दोस्तों भाई बहनों। जवाब दिस योर चॉइस और स्टेशन रेडियो एसकेएस। जवाब तो 2 कदम आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर दोस्तों भाई बहनों, एक छोटी मोटी गीत आपके मध्य में रखते हैं। उसके बाद में जवाब दोस्तों भाई बहनों यानी कि bedrijvigheid bij Radio SKS na de klok van 11 uur. Jawel, na de klok van 12 uur. Bedrijvigheid bij Radio SKS. Your choice, your station. दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती, न बनते प्यार के दुश्मन, न सीने में चुभन होती। न होती दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती, न बनते प्यार के दुश्मन, न सीने में चुभन होती। जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें, जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें, इशारा करके दोनों को कानों में हुई बातें, देखता कोई न आँखों में अगन होती, न बनते प्यार के दुश्मन, न सीने में चुभन होती। मोहब्बत समा